Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss veins and capillaries. So let's move to the classboard. So dear students, blood vessels and in blood vessels we have discussed number 1, arteries, that has been discussed, and now the second type of the blood vessels, they are capillaries. So dear students, capillaries actually they are formed by the repeated divisions of arterioles. तो तरतीब कुछ इस तरह से है, सीक्वेंस कुछ इस तरह से है. So artery, it will divide and form arteriole, and the arterioles, they divide to form capillary. Clear? So that is a sequence. So capillaries are formed by the repeated divisions of arterioles. क्लियर? ये एमसीक्यूज के लिए भी मार्क कर लें. तो आर्टेरियोल्स से की डिवीजन से बनती हैं कैपिलरीज, एंड दीज आर द कैपिलरीज वन सेल थिक. इनके जो वॉल्स हैं और वो सिर्फ एक सेल थिक हैं, एंड हैव ओनली वन लेयर. क्लियर? So the composition capillaries are made up of a single layer of endothelium. Okay? और एंडोथीलियम के स्टूडेंट्स कौन सी लेयर है? दैट इज प्रेजेंट इन द ट्यूनिका इंटीमा. क्लियर? इट इज ट्यूनिका इंटीमा जो थी एक्चुअली एंडोथीलियल जो आर्टरीज में इंटीमा थी एक्चुअली, जहाँ पर वो सिंगल लेयर है. एंड इट्स स्ट्रक्चर how do they look like?
So this is how they look like. Okay, so this is single layer, which is endothelium. And this is the lumen, means the bore of the capillary. And the walls of capillaries are permeable to water and glucose and amino acids and fatty acids, okay, and glycerol, hormones, gases. So that's why capillaries are involved in exchange of materials. सो चूँकि इनकी वॉल्स जो होती हैं वो थोड़ी पोरस होती हैं, उनमें उनके दरमियान इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, वो आगे चल के फैक्टर मज़ीद डिस्कस भी करेंगे। तो इस वजह से ये जो उनसे माइक्रो मॉलिक्यूल्स है ख़ास तौर पर, ये वहाँ से स्किप कर सकते हैं, वो डिफ्यूज़ कर सकते हैं, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट इज़ द रीज़न जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, आर्टेरियोल्स एंड वेन्यूल्स एंड वेन्स, उनमें सिर्फ और सिर्फ कैपिलरीज ऐसी होती हैं जिस लेवल के ऊपर जो मटेरियल जो एक्सचेंज होता है, और किसी भी जगह के ऊपर जो मटेरियल्स हैं वो किसी भी तरीके से एक्सचेंज नहीं होते। और एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन कर लें, these are microscopic blood vessels. Clear? Now control of their diameter, how their diameter is controlled. तो दो तरीके हैं डियर स्टूडेंट्स। नंबर 1, by nervous stimulation, if the nerves are जो nerves आ रही हैं वो इनको stimulate करें, so उससे क्या होगा, it leads to decrease in diameter, वो diameter को decrease करेंगे, और even the closure of capillaries, वो इनको क्लोज भी करवा सकते हैं, ठीक है, इनके वो लुमेन को क्लोज करवा सकते हैं। लेकिन कैसे? बाय नर्वस स्टिमुलेशन। और दूसरा तरीका क्या है? बाय केमिकल्स, अब वो केमिकल्स किस तरह से इफेक्ट करते हैं इसके डायमीटर को? लाइक हिस्टामिन, हिस्टामिन का पता है डियर स्टूडेंट्स, बेसोफिल से रिलीज होता है हिस्टामिन, इसको एमसीक्यू के लिए मार्क कर ले इस केमिकल को। इट डायलेट्स
it dilates the capillaries. Here. Now, what is the mechanism? What is the mechanism? अब डियर स्टूडेंट्स, बहुत कॉमन सेंस की बात है. आप सोच रहे होंगे कि आर्टरीज के अंदर तो मसल्स मौजूद हैं, सर्कुलर स्मूथ मसल्स मौजूद हैं. हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया. तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन से, उनकी रिलैक्सेशन से आर्टरीज या आर्टेरियोल्स, इनके डायमीटर को कंट्रोल किया जा सकता है. लेकिन यहाँ पर तो है ही एक लेयर, और वो भी एंडोथीलियम की. सो यहाँ पर डायमीटर को कैसे कम या ज़्यादा किया जा सके? यहाँ पर तो मसल्स नहीं है. सो हाउ दिस इज पॉसिबल? एक्चुअली द इंक्रीज or decrease in capillary diameter is attained by change in the shape of cells which line endothelium. मतलब कि जो एंडोथीलियल सेल्स हैं उनकी शेप इस तरह से चेंज होती है और उनके अंदर इस तरह से चेंजेस आती हैं कि कैपिलरी का डायमीटर कम और ज़्यादा होता है. हालांकि यहाँ पर कोई मसल्स नहीं है. सो ओनली द मैकेनिज्म इज द चेंज इन द शेप ऑफ द सेल्स which make the walls of the capillaries. Okay, and also how the flow is, regulation of flow, flow of blood. तो किस तरह से होगा इनके अंदर कैपिलरीज में? द प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स, प्री कैपिलरी यानी कैपिलरीज से पहले यहाँ पर स्फिंक्टर्स होते हैं. स्फिंक्टर हमने पढ़ा था, ये बेसिकली रिंग लाइक मस्कुलर टिश्यू होता है जो कि ओपन और क्लोज करता है, और किसी भी जो ओपनिंग होती है, जो ट्यूब होती है, उसके डायमीटर को कंट्रोल कर रहा होता है, वहाँ से मटेरियल्स के पास करने को कंट्रोल करता है. सो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स, प्री कैपिलरी का मतलब कैपिलरी से पहले वाले. सो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स help in the flow of direction of blood. क्लियर? तो इस तरह से वो उनके जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन उसको कंट्रोल किया जाता है. और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से याद रखिएगा one more thing related to this capillaries, that how the materials are exchanged. क्योंकि हमने बात की कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर एक्सचेंज होता है. कोई भी चीज़ खा रहे हैं, पी रहे हैं, गैसेस हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट है, एनीथिंग, वो कहाँ पर एक्सचेंज होता है? कैपिलरीज के अंदर. ठीक है, कैपिलरी लेवल पे. तो वो किस तरह से होगा, किस मैकेनिज्म्स के जरिए होगा, उसको डिस्कस कर लेते हैं. ओवर हियर the control and mechanism of transport and exchange of materials between capillaries and cells, ठीक है, और tissues and extracellular fluid.
इसमें किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है, किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, किस तरह से उसके मैकेनिज्म को देखा जाता है. सो देयर आर 3 मेजर प्रोसेसेस बाय विच द कैपिलरीज से मटेरियल जो है वो एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा. द फर्स्ट थिंग इज नंबर 1 is active transport and diffusion. ठीक है, the first mechanism is active transport and diffusion, means the passive transport. तो इस प्रोसेस के जरिए क्या होगा, the materials pass from capillary से वो जाएंगे to the extracellular fluid और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जाएंगे वो सेल्स में. तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट होगी. एंड वाइस वर्सा, वहां से यानी सेल से कैसे वापस कैपिलरी के अंदर कैसे आएंगे, तो सेल से जाएंगे पहले एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में और वहां से जाएंगे कैपिलरी में. लेकिन प्रोसेस यहां पर क्या इस्तेमाल हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर सिंपल डिफ्यूजन के जरिए. 2 प्रोसेस. एक्टिव ट्रांसपोर्ट, it is the movement of molecules from an area of low concentration to high concentration by using ATP. Clear? Or diffusion, it is the movement of molecules from an area of high concentration to low concentration without using energy. Clear? So that is the first mechanism. Now, the second mechanism is the intercellular spaces. इंटरसेलुलर स्पेसेस. डियर स्टूडेंट्स, जो कैपिलरीज के जो सेल्स होते हैं यानी एंडोथेलियल सेल्स, इनके दरमियान स्पेसेस जो होती हैं वो बाकी सेल्स की निस्बत ज़्यादा होती हैं. बाकी जो ब्लड वेसल्स के सेल्स हैं वो ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से द इंटरसेलुलर स्पेसेस इन कैपिलरीज allow the leakage of materials from capillaries to extracellular fluid, या जिसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड. इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं. और डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट है. यहीं पर इसका मैं आंसर लिखने लगा हूं. द फ्लूइड, द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स. जो सेल्स के दरमियान फ्लूइड होता है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं या उसको एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं. ठीक है. इट कंटेन्स वाटर, इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, जितने भी डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जो डिसॉल्व हुए थे वो सब के सब, यानी ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड लिपिड्स एक्सेट्रा, and the waste. ठीक है. इसके अलावा इसके अंदर हॉर्मोन्स प्लस गैसेस. ठीक है. तो जो गैसेस यानी कि ट्रेवल करके इन ब्लड से, इन कैपिलरी से निकलकर और जाती हैं इस फ्लूइड में, फिर फ्लूइड से आगे पास करके जाएंगी टू द सेल्स. तो इस तरह से वो वाली गैसेस, यानी इटसेल्फ ये ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व तो नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में तो गैसेस किसके साथ आ रही हैं, आरबीसीज के साथ आ रही है यूजुअली, और या प्लाज्मा के साथ आ रही है, हमने पढ़ा था. तो वो गैसेस जो है वो अल्टीमेटली डिफ्यूज करके या इन मैकेनिज्म्स के इन इंटरसेलुलर स्पेसेस से लीक कर कर और वहाँ तक पहुँचेंगी. ठीक है, बाय द डिफरेंट वेज जो हमने पढ़े थे. सो दैट इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड. और तीसरा मैकेनिज्म डियर स्टूडेंट
by एंडोसाइटोसिस, ये आपने पढ़ा था फैगोसाइटोसिस की दो टाइप्स, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। सो एंडोसाइटोसिस आगे इसकी दो टाइप्स, फैगो एंड पिनोसाइटोसिस। क्लियर? सो बाय एंडोसाइटोसिस द मटेरियल्स are moved into एंडोथीलियम, यानी लुमन से किस में आएंगे, एंडोथीलियम में आएंगे, उसके लेयर में, एंड फ्रॉम हेयर बाय एक्सोसाइटोसिस टू आउटसाइड, और फिर इस कैपिलरी के बाहर जो है वो एक्सोसाइटोसिस के जरिए बाहर। तो इस लुमन से मटेरियल पहले एंडोसाइटोसिस के जरिए अंदर आएगा और फिर एक्सोसाइटोसिस से यहाँ से निकलकर और बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आना शुरू हो जाए, और इसी तरह रिवर्स हो सकता है। इसी तरह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से वापस आ सकते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से वापस कैसे आएंगे, पहले यहाँ पर एंडोसाइटोसिस होगी और फिर एक्सोसाइटोसिस से होकर वो अंदर लुमन में आएंगे, रिवर्स प्रोसेस के जरिए। क्लियर? और डिफरेंस, ये कैपिलरी नेटवर्क इतना डेंस होता है कि कोई भी सेल, नॉट इवन अ सिंगल सेल इज फार फ्रॉम फूड एंड द ऑक्सीजन। The capillary network is so dense, इतना ज़्यादा फैला हुआ है, that not even a single cell is away from food or oxygen. Or dear students, the liver cells यानी कि hepatocytes, the liver cells are in direct contact with capillaries. Clear? वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के साथ मौजूद है, हर सेल को इंडिविजुअली एक कैपिलरी जो है वो जा रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ द थर्ड कैटेगरी इज capillaries have been discussed. Now third one are the veins. So how veins are formed? Arteries, they divide to form arterioles, which divide to form the capillaries, and the capillaries, they join, means they add up to form venules, and venules, they join to form veins. Clear? So veins, so इनको डिफाइन करेंगे हम पहले, ये तो इनकी फॉर्मेशन बता दी आपको। नाउ द ब्लड वेसल्स, that carry blood towards the heart are called veins. Clear? So की वर्ड याद रखिएगा इसका, towards the heart. आर्टरीज क्या करती हैं, away from the heart, और कैपिलरीज क्या हैं, they are intermediate between them. Clear? They are between them, and
veins usually carry deoxygenated blood but with an exception, एक ही exception है, जी dear students, वो कहाँ पर है? With an exception of pulmonary vein. Pulmonary veins that carry oxygenated blood from lungs to the left atrium of heart. Clear? So ये वाहिद एक एक्सेप्शन है, ठीक है, ये एक्सेप्शन भी याद रखनी है आपने. और नॉर्मली क्या इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. एंड एज फार एज देयर कंपोजिशन इज कंसर्न्ड, and structure, so they are also made up of 3 layers. Like the arteries, but with a difference that the middle layer is a little bit thin. So this is outer layer or tunica externa or tunica adventitia, and this is the muscular layer, the smooth muscle layer, and this is elastic layer, and both of these layers they form the middle layer, which is the tunica media, and this is the inner layer or tunica intima. Clear? The only difference is between the arteries and veins. Composition तो वही 3 layers हैं. Outer layer, tunica externa, or tunica adventitia. It is composed of
the connective tissue, and it is actually the fibrous connective tissue. Number 2, the middle layer, or tunica media, to have less and thin layer of smooth muscles, and less elastic fibers than arteries. Okay? तो ये एक डिफरेंस है इनके अंदर कि इनकी जो आर्टरीज के में जो मिडल लेयर है वो थोड़ी बारीक होती है, इसमें मसल्स भी कम हैं और इलास्टिक टिश्यूज़ भी कम हैं, यानी इलास्टिक फाइबर्स भी कम हैं इसमें. एंड द इनर लेयर, which is called tunica intima, it is composed of endothelium. Clear? So that is the composition and structure. अब बात करते हैं इनके, they have valves. They have valves. तो कैपिलरीज के अंदर डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सॉरी, द वेन्स हैव सेमिलुनर valves which prevent the backflow of blood. क्योंकि इन्होंने अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर लेके आना ब्लड को, ठीक है. तो जैसे जैसे ऊपर मूव करता जाएगा ब्लड, तो यहाँ पर लाइक इतने पोर्शन में आ चुका है, इतने पोर्शन पे, तो उससे पीछे ना जा, बैक फ्लो ना हो सके, तो वहाँ पर जगह जगह के ऊपर सेमिलुनर वाल्व्स हैं. सेमिलुनर वाल्व्स याद आपको हार्ट में भी पड़े थे, ठीक है, एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व. उसी तरह से वेन्स के अंदर भी जो वाल्व्स हैं वो सेमिलुनर हैं. ये एमसीक्यू के लिए मार्क कर लें इसको. They have semilunar valves. और the veins join to form larger veins, और ये दो लार्जर वेन्स हैं, इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा. याद आपको हार्ट में पढ़ाया था. इंफीरियर वेना केवा नीचे वाले बॉडी पार्ट से डिऑक्सिजन ब्लड लेकर पहुंच रही है टू द राइट एट्रियम, और सुपीरियर वेना केवा हेड, नेक और इन रीजन से लेकर पहुंच रही है डिऑक्सिजन ब्लड टू द राइट एट्रियम. सो दीज आर द टू large veins, ठीक है, and these large veins pour deoxygenated blood into right atrium. Clear? और डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ अपने जहन में रखनी है कि दीज आर द लार्जेस्ट वेन्स. इस तरह से आर्टरी के एतबार से अगर हम बात करें तो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी जो है विच हैव द हाईएस्ट बोर, हाईएस्ट डायमीटर, दैट इज एओर्टा. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ दीज ब्लड वेसल्स. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.